Salam sir, may I come in? Yes, come in. Salam sir. Sit down. Thank you, sir. Good to see you all. Assalamu alaikum Afaq. Salam. How are you? I'm fine sir. So please introduce yourself. सर माई सेल्फ फवाद हाशमी और मैं स्कोर सॉल्यूशंस के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ एज ए लीड पेनिट्रेशन टेस्टर। हमारे यहाँ पे काम ये होता है कि इस टाइम 5 पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं जिनको कंपनी के अंदर मैंने लीड करना है। इसके अलावा हमारी कंपनी के अंदर तकरीबन 100 के करीब डेवलपर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते रहते हैं और उनके सारे डेवलपमेंट को प्रोडक्शन में जाने से पहले हमने टेस्ट करना होता है। इस काम के अलावा सर सिक्योर सॉल्यूशंस के अंदर हमारे जो भी सेल्स के काम होते हैं, हमारे जो भी टेंडर्स होते हैं, जो भी सॉल्यूशंस की प्राइसिंग होती है उसको मैं डील करता हूँ। और इसके अलावा हमारी कंपनी के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं एम्प्लॉयज की या हमारी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनको भी जाके मैं लीड करता हूँ। Okay. Can you please tell why did you apply to be a lead penetration tester and manager at Netel? सर इस कंपनी के अंदर 5 साल पहले जब मैं आया तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट नहीं होता था, तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को स्पेशली उसके अंदर जो रेड टीम का डिपार्टमेंट है इसको मैंने बिल्ड किया, फिर हायरिंग की, फिर प्रोसेसेस बनाए। तो पिछले 5 साल के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा काम यहाँ पे सेटअप कर दिया और इनकी टीम को मैंने काफी स्टैब्लिश कर दिया। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे अपना काम कंप्लीट नजर आता है। मैं चाहता हूँ कि नए चैलेंजेस की तरफ जाऊँ, नए एनवायरमेंट्स की तरफ जाऊँ, जो दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजी चल रही है उनको सीखूं। तभी ये मेरा मेन पर्पस है कि मैं अपनी जॉब को भी यहाँ से शिफ्ट करूँ। Okay. So Afaq, you are two heads, manager and lead pen tester. How do you balance manager duties while keeping your technical hand-on skill sharp? Especially, how do you structure your red team operations? सर बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि हमें काफी सारे चीजों को फिर डेलीगेट करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारे 100 डेवलपर्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली डेवलपमेंट करते हैं। तो अब अगर सारी टेस्टिंग को मैं खुद एक्चुअल में पढ़ना शुरू कर दूंगा या करना शुरू कर दूंगा तो सारी बातें फिर मैं बाकी सारे काम नहीं कर सकता। तो लीड या मैनेजरियल रोल में आने के लिए मुझे करना ही होता है कि फिर मैं अपनी चीजों को और हमारे जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको सिर्फ मैं सुपरवाइज करता हूँ और जहाँ पे जरूरत पड़ती है सिर्फ वहां पे मैं इंटरवीन करके चीजों को वहां पे एक्चुअल में खुद हैंड्स ऑन टेस्ट करता हूँ और बाकी वहां पे मैं लीडरशिप रोल में रहता हूँ। Okay. So एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि if a junior team member proposes an attack method जो कि आपको नहीं पता, how do you validate it without slowing them down? अच्छा, उसमें ऐसा है कि अगर मेरे जूनियर मेरे पास आते हैं, कोई ऐसी टेस्टिंग या कोई ऐसी टेक्निक लेके आते हैं जो मुझे नहीं आती, जो कि प्रैक्टिकली बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है, क्योंकि सारी बात है दुनिया की हर टेक्निक हर बंदे को नहीं पता। जो बंदा भी स्टडी करेगा वो कोई ना कोई नई चीज आपके पास लेके आएगा। तो इससे हम उनके साथ बैठते हैं और प्रॉपर्ली उनकी बात को एक्नॉलेज करते हैं कि यार वाकई ऐसा हो सकता है कि आपका जूनियर भी आपसे नई चीजें लेके आए जो आपको नहीं पता। उनके साथ हम बैठ के चीजों को स्टडी करते हैं, चीजों की हम POC करते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करते हैं। अगर उनकी बात ठीक होती है तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं और प्रैक्टिकली अपनी SOPs के अंदर या अपनी पॉलिसीज के अंदर उस बात को हम शामिल कर देते हैं। Thank you, Afaq. Okay. अस्सलाम वालेकुम अफाक। आपसे पहला सवाल मेरा ये है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि आप एक एक्टिव डायरेक्टरी में हैं, ठीक है, एक एनवायरनमेंट में जिसके अंदर हैवी EDR है, ठीक है, एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस मॉनिटरिंग आपकी वहाँ लगी हुई है, एंड हम यहाँ बात करें लेटरल मूवमेंट की। तो आप ये बताएं कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी कि आप लेटरली मूव करें, ठीक है, विद इन दिस सिस्टम विदाउट इवन ट्रिगरिंग द अलार्म्स। बिल्कुल वेरी वैलिड क्वेश्चन। होता है कि जब भी हम किसी एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं तो प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी के अंदर लाजमी तौर पे वहाँ पे कोई ना कोई EDR यानी कि एंटीवायरस जा रहे होते हैं। अब वहाँ पे लेटरली मूव करने के लिए जाहिर बात है हमें कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स लगानी होती हैं। अगर वहाँ पे एक EDR चल रहा है जो कि अच्छा पेड EDR है तो बहुत चांस है वो आपको पकड़ लेगा। कंपनीज के अंदर मल्टीपल सीम सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं और चीज आपको जाहिर बात है वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। उस केस के अंदर करना ये होता है कि इवेजन नाम की ना पूरी एक दुनिया है सिक्योरिटी के अंदर जिसपे हम उसकी फिर हम फॉर्मूलाज और पॉलिसीज को लेकर चलते हैं कि कैसे हम अपने काम करें बगैर पकड़े। फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट होता है हमारी पेन टेस्टिंग के अंदर लिविंग ऑफ द लैंड। लिविंग ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है कि भाई आप वो टेक्निक्स इस्तेमाल करें जो कि सिस्टम्स के अंदर डिफॉल्ट टेक्निक्स हैं। मतलब ऐसी टेक्निक्स जो कोई बहुत अजनबी आप लेट्स से एक्सटर्नल टूल नहीं ला रहे, आप विंडोज के अपने बिल्ट इन के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने मलिशियस कामों को अगर पूरा कर लेंगे तो उसका हमें फायदा होगा। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने एक पीसी से दूसरी पीसी के ऊपर जाना है तो अमूमन एक हम बाइनरी इस्तेमाल करते हैं, एक हम छोटी सी exe फाइल यूज करते हैं जिसका नाम है नेटकैट। अब नेटकैट मैक्सिमम कंपनीज ने वैसे ही ब्लॉक किया होता है और नेटकैट का कोई भी कनेक्शन कहीं से ओरिजिन होगा वो पकड़ा जाएगा, पता चल जाएगा। अब उसका अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम पावर शेल के थ्रू हम मल्टीपल पीसीज के अंदर जाके वहां पे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। PS रिमोटिंग का जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस विंडोज का नेटिव प्रोसेस है, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको बाय डिफॉल्ट कोई चीज उसको कैप्चर करेगी।
सो दिस इज द थिंग कि लेट्स से हम लिविंग ऑफ द लैंड जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करके चीजों को इवेट करके इनक्रिप्ट करके इनकोड करके हम ऐसे काम कर सकते हैं कि हम ईडीआर के सिग्नेचर्स के अंदर ना आए। ओके, आपसे एक और सवाल इस चीज में ये है कि आप ये बता सकते हैं गोल्डन टिकट और सिल्वर टिकट में क्या फर्क है अटैक में? जी, ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली दो अटैक्स होते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, गोल्डन टिकट अटैक और सिल्वर टिकट अटैक। सिल्वर टिकट अटैक में क्या होता है, अगर मैं इसको बस समराइज करूं, उस केस के अंदर हम किसी सर्विस के अकाउंट को हैक कर लेते हैं और वो सर्विस जो जो काम कर सकती है हम उस सर्विस के बिहाफ पे कर सकते हैं। लेकिन किसी गोल्डन टिकट अटैक के अंदर क्या होता है कि हम जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो उसकी टिकटिंग का पूरा जो मैकेनिज्म है उस पूरे टिकटिंग मैकेनिज्म को हम हैक कर लेते हैं। उस टिकट का असल नाम होता है टीजीटी। अगर हम इस काबिल हो जाएं कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अपने टीजीटीज खुद बना सकें तो हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर किसी भी यूजर के बिहाफ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फुल एक्टिव डायरेक्टरी कंप्रोमाइज है। कभी वर्ड गोल्डन से समझ के आती है कि आपको कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। तो पॉइंट इज कि अगर आप इस काबिल हैं कि आप गोल्डन टिकट अटैक कर सकें तो आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर किसी भी यूजर या सर्विस के बिहाफ पे लॉग इन करके चीजें जो भी करना चाहे कर सकते हैं। सिल्वर टिकट में आप किसी स्पेसिफिक सर्विस के अकाउंट को हैक करते हैं और उसके थ्रू आप एडी के अंदर जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि इन दोनों में से कौन सा स्टेल्थियर है? स्टेल्थियर इसमें सिल्वर है कि जाहिर बात है सिल्वर टिकट स्टेल्थियर क्यों है कि उसमें जो अगर आपने सर्विस के अकाउंट को कंप्रोमाइज कर लिया ना, जब आप एडी में लॉग इन करते हैं उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए तो आपकी वेरिफिकेशन जो है वो केडीसी से नहीं होती। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो आपकी चीज को वेरीफाई नहीं करता बल्कि सर्विस अकाउंट अपनी मशीन के ऊपर ही आपके जो इंक्रिप्शन आती है उसको वैलिडेट करता है अपने हैश से। तो इस केस में फायदा क्या होता है कि उस जब तक उस इटसेल्फ मशीन के ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं चाह रहा, जो कि अमूमन नहीं चाह रहा होता, सारी प्रोडक्शन अमूमन डीसी के ऊपर लगाई जाती है। तो उस केस में आपकी विजन इसके अंदर ज्यादा आसान है कि आपने पूरे नेटवर्क में किसी से ऑथेंटिकेशन करवानी नहीं है। कोई सेंट्रलाइज जगह है ही नहीं कि जहां पे आप ऑथेंटिकेशन कराएं और पकड़े जाएं। आप जिस मशीन को हैक कर रहे हैं उसका अगर आपके पास सिल्वर टिकट है तो आप उसमें लॉग इन कर जाएंगे। Okay. So, Afaq, I have seen that your technical knowledge is on point, but I would like to say something that you had been previously working for Secure Solutions, am I right? Yes. So, now tell me that why did you actually leave that job or why did you move ahead? That is the question. Basically. तो जैसे कि आप जस्ट एक्सप्लेन टू दिस जेंटलमैन कि सिक्योर सॉल्यूशंस की जो पूरी सिक्योरिटी टीम थी वो मैंने ही बिल्ड की। अब एक कंपनी में आप उसकी पूरी टीम को बिल्ड करें और 2 साल से वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन में हो और टोटल आप उस कंपनी के अंदर 5 साल लगा चुके हो तो मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक्सपर्टीज अपनी सर्विसेज किसी नई कंपनी में जाके सर्व करूँ, किसी नए चैलेंजेस के ऊपर जाके मैं अपना हाथ साफ करूँ ताकि कोई नई कंपनी कोई नया एनवायरनमेंट वहाँ पे जाके मेरी भी लर्निंग हो और बाकी लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस से फायदा पहुंचा सके। So, basically, you were looking for growth, right? Yes. Okay. So, Afaq, after a successful red team engagement, where you have dominated the most, how would you debrief it to the blue team? So it's a valid question. Basically, when I started my career, I started as a blue teamer. Like for the 5 years, I'm not doing just red teaming. In the initial 2 years, I also went into the blue teaming field as well. So practically speaking, right now it's very difficult for me to switch to blue team because basically these are very different fields. You cannot expect someone to switch between all the fields. Like you cannot ask me to switch to red team to blue team immediately. Of course, one can try to do it, but it will be very difficult for me. So basically, my future goals for your company is to be in the red team if possible. That will be helpful. So, how are you going to lead the blue team so that they don't feel like that they are inferior to you? Yes, it's a good question. मेरा फ्यूचर प्लान अभी यही है कि अल्टीमेटली मैं खुद को रेड टीम की लीडरशिप से हटा के मैं खुद को ब्लू टीम और बाकी जीआरसी की लीडरशिप में भी लेके जाऊं। एज ऑफ नाउ if you require, I can lead the blue team, no problem in that. But practically speaking, there are better guys who can lead your blue team. So right now, my focus is just on developing my red teaming skills and leading the red team. Afaq, what is one security trend you think is overhyped and why? Yes, that's a very good question. I think, let me think about it. Clicking a phishing link, I guess, because sometimes it's very overhyped that you will just click a link and you will get hacked. Of course, there are some very complex security vulnerabilities where you can just get hacked by clicking a link. But practically speaking, when you click a link, you just don't get hacked right away.
When you click on the link, you go to some website, which is a fake scam website. You put your credentials in that website. This is the basic thing, that they steal your credentials. So this is my point of view about that. Is just by clicking the link, sometimes it is mentioned on social media that I click on the wrong link and my feeling is set. So this is basically not actually very true. All right, now I would be asking you a scenario-based question. You notice unusual activity on your company's network after hours. What are the steps that you would be taking to ensure that everything is safe and secure? Yeah, it's a very important question. So basically, in our company, we have 24/7 monitoring of ourselves and of our customers. So in our office environment, if you observe any activity after office hours, let's say I can say that, for example, the activity is that some of our employee is trying to log in one of our production servers, and the login is getting failed. So this is a big suspicion that why after 6:20 or 6:30, one of our employee is trying to log in into our production server, even he's not able to try, even he's not able to do a successful login. There are failed multiple attempts. So there are multiple reasons to it. First of all, we try to call that person. If that person is not responding, we right away revoke his access. So by revoking his access, basically you have contained all of the spread which was going to happen. So we try to talk to that employee. We cut all of its access. We have centralized system in our company, so we do not have to go on each individual server and try to revoke his access. We have centralized mechanism. We can directly with one click revoke his access. All right, now Mubarak would be asking you one or two questions, then we will conclude your interview. Okay, Afaq. Cybersecurity burns people out very quickly. So, what is your personal philosophy on team nutrition? I Yes. mean, how do you ensure your juniors grow without getting burnt out? Yes, it's a very relevant question. And I think not just cybersecurity, basically all the modern fields which are coming up nowadays, they require a very hardship. So they definitely burn you out and they burn your juniors out. In Airtel, we have a very good culture in which managers are reminded continuously to just not manage the technical aspect, but also manage the human aspect of your juniors. So what we try to do is that we try to build, first of all, a friendly relationship with our juniors. The more friendly I am with my juniors, of course, keeping in mind their privacy and their boundaries, the more friendly I am with my juniors, the more they are able to share their views and their personal issues with me. So what we do whenever I'm scheduling some testing or whenever we are preparing our next month's schedule, it's not just top to bottom. I don't just hand them over a sheet like this is your sheet, follow it. First of all, we have a discussion on it. That guys, this is what I'm planning to do. If you have any input, if someone wants to take leave, if someone has some problem, you can discuss and share. So basically, I guess discussion, like in every other relationship, the more the healthier discussion is between the manager and the juniors, the more easy it is to view the problems before they come, and the more easy it is to tap it down. Very good. So, just before we conclude, I would like to ask a few questions about your availability. As you know, cybersecurity, we need 24/7 watch on our servers. So, where do you live? Sir, I currently live in Islamabad. In Islamabad. And where exactly do you live in Sir, Islamabad? in G7. G7. And do you have a commute? Yes, sir. I have my own car, my own bike. You have your own bike. So, would you be willing to work overtime in case there was some emergency or some server breach or something? Yeah, sure. This happens in every IT environment, especially in cybersecurity. So I have no problem in doing the overtimes or doing late night shifts. Of course, ideally this should not happen. We should have a proper mechanism for everything. But this world is not ideal, and of course we have to do some extra. We have to go some extra mile. I guess that concludes our interview. Thank you very much for talking with us. Sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah, well.